नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपन जदि आम चैनल को प्रथम आछंती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। देखो आज गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर पर आम नजर पकईवा जो थी कि माननीय सुप्रीमकोर्ट को गोटे गुरुत्वपूर्ण राय आसी जोटा कि समस्त जो कर्मचारी अच्छा सरकारी कर्मचारी से गोटे खुशी खबर। आम से विषय आज संपूर्ण आलोचना करिया। मु ऑर्डर देखी शेष में कौन माननीय सुप्रीमकोर्ट ऑर्डर देते देखूँ तो से विषय में आलोचना करिया। दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यंत देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय जानीपर। तो ये देखूँ माननीय सुप्रीमकोर्ट ये निर्देश कहते जे इन डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जिते सरकारी कर्मचारी माने डायरेक्ट एग्जाम देकी रिक्रुटमेंट हुई थ्रो एग्जाम सीनियरिटी जो रही मस्ट बी बेस्ड ऑन मार्क एंड नॉट पास्ट सर्विस। तो पास्ट सर्विस अनुसार सीनियरिटी की गणाजीव ना जोटा कि मार्क अनुसार अर्थात जिते आप एग्जाम देते आपण ग्रेडेसन अनुसार आपन को सीनियरिटी मिल जोटा कि माननीय सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण निर्देश कहते। ये देखूँ तो सुप्रीमकोर्ट रिसेंटली इनवैलिडेट ए तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑर्डर गोटे राज्य सरकार देते दैट गिव इन ए सर्विस कैंडिडेट सीनियरिटी ओवर ओपन मार्केट रिक्रूट डिस्पाइट द later scoring higher mark in the selection exam. The court emphasized that the seniority जो रही should be based on performance in the exam. जो seniority रही सेटा एग्जाम अनुसार परफॉर्मेंस अनुसार आपनकर मेंटेन हबो rather than unrelated factor such as prior in service experience को नहीं एटा seniority fix करा जाय परिबो नहीं। The court reiterated that once an appointment to service is made based upon a competitive exam रे जदि हेतिबो the seniority जो रही has been maintained on the basis of performance in the examination not by taking into account the past service alone। past service की रही कि एटा करा जाय परिबो नहीं। The bench comprising justice B.B. नागरत्न जी अछंती माननीय जस्टिस and S.C. शर्मा heard the case where Tamil Nadu police subordinate service rule अनुसार original no promotion quota was fixed for head constable for direct recruitment process for sub inspector। Later on a government order was passed जोटा कि 1995 reversing जो 20% direct recruitment vacancy for in service constable granting them seniority। These were not initially incorporated into statutory rule। The aforesaid government order further provided that inter seniority of the candidate selected under the 20% in-service candidate would be placed above those selected in open competition in that year by way of direct recruitment। ताले जोड़ाक सिलेक्शन होते अर्थात आप प्रमोशन पाई से डायरेक्ट रिक्रुटमेंट उपरे रखी बोली सरकार ऑर्डर देते। द डिस्प्यूट सेंटर ऑन द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन द गवर्नमेंट ऑर्डर बाय एन अमेंडमेंट टू द जो 1955 रूल थिला तांकर 2017 एटा परिवर्तन कराइथिला जोटा कि सीनियरिटी पॉलिसी को नहीं। द अपीलेट डायरेक्ट रिक्रूट फ्रॉम द ओपन मार्केट चैलेंज द अमेंडमेंट जो थिला स्टेटिंग दैट द ग्रांटिंग सीनियरिटी टू इन सर्विस कैंडिडेट विथ लोअर मार्क वायोलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो रही आर्टिकल 14 को वायोलेट करुच्ची एंड मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट जो आर्टिकल 16 ताकू वायोलेट करुच्ची से कोर्टर द्वारस्थ होते। द की इश्यू वाज वेदर द जो 2017 रूल अनुसार द अमेंडमेंट रूल जो होता ग्रांटिंग सीनियरिटी टू इन सर्विस कैंडिडेट ओवर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट वायोलेटेड आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी एवं आर्टिकल 16 नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड 21 जो रही आर्टिकल ड्यू प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताकू फॉलो करने जो संविधान धारा अच्छी disagreeing with the High Court ruling which preferred in-service experience over direct recruit while granting seniority. The judgment authored by Justice Sharma observed that statutory rule cannot be withheld down by the executive or government order जो रही ताकू डाउन करा जाय परिबन। The court also held that in a direct recruitment seniority cannot be given to an in-service candidate who secured lower mark। जदि इन सर्विस कैंडिडेट को लोअर मार्क अच्छी तांकू सीनियरिटी अधिक दि जाय परिबो नहीं। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट इन ए डायरेक्ट रिक्रुटमेंट सीनियरिटी कैन नॉट बी गिवेन टू इन सर्विस कैंडिडेट हु सिक्योर्ड लो मार्क। द अमेंडमेंट बोर्ड जोटा अमेंडमेंट कराइला जोटा कि आर्टिकल
14, 16 एवं आर्टिकल 21 को वायोलेट करुच्ची कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो रही आमर भारत सरकार भारत संविधान रे जोटा रही डिजर्व टू बी स्टक डाउन बाय दिस कोर्ट से अनुसार जे देखिबा फर्दर द कोर्ट नोटेड दैट स्टेट इरेड इन द गिविंग रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट इन द मैटर ऑफ सीनियरिटी meaning thereby giving a preferential treatment to the in-service candidate who are less meritorious and who have already been granted a concession or permitting them to appear under 20% quota earmarked for them जोटा कि the action of the state government in amending the recruitment rule जो रही with retrospective effect is certainly violate जो करुच्ची आर्टिकल 14, 16 एवं 21 कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रही जो नागरिक मानक ताकू वायलेट करुच्ची ए स्टैट्यू व्हिच मेक अवे द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रेस्पेक्टिव इफेक्ट डिजर्व टू बी असाइड बाय द कोर्ट सेड से अनुसार देखा ये गुरुत्वपूर्ण कथा भी कोर्ट कहते जो थे आम देखा इन दिस रिगार्ड रेफरेंस वाज ड्रॉन टू द केस जोटा होता दिनेश कुमार गुप्ता अदर्स वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ जुडिक्चर ऑफ राजस्थान एंड अदर्स where also the High Court granted seniority based upon the candidate past service. However, the Supreme Court in the aforesaid case also held that once an appointment to service is based made upon the competitive exam, the seniority जो रही has to be maintained on the basis of performance in the examination, not by taking into account of past service ताकू निया जाई परिबो नहीं. Also the court referred to the प्रेम नारायण सिंह जो कोर्ट केस होता अदर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ताकू रेफरेंस हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं. इन द प्रेजेंट केस द डायरेक्ट रिक्रुटमेंट हैज बीन डन 20% वैकेंसी आउ जोटा कि आमर सीनियरिटी आमर जोटा दिया होची 20% 80% डायरेक्ट रिक्रुटमेंट 20% रे आमर प्रमोशन ने होची जोटा कि रूल अनुसार होची किंतु ये कोर्ट डायरेक्ट मना करचंती कि कौन सी प्रकार भी एग्जामिनेशन जे डायरेक्ट रिक्रुटमेंट रे एग्जाम जो होती दैट आफ्टर इश्यूएंस ऑफ रिवाइज सीनियरिटी द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसीडर द केस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट कैंडिडेट फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर पोस्ट कीपिंग इन द व्यू ऑफ प्रमोशन ग्रांटेड टू द सीनियर जूनियर बेस्ड अपॉन द रिवाइज सीनियरिटी लिस्ट एंड द एक्सरसाइज ऑफ ग्रांटिंग प्रमोशन बी कंक्लूडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रुटी जो 80% कोटा विथिन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस रिवाइज सीनियरिटी लिस्ट अनुसार ताकू दवाई मान्यवर कोर्ट निर्देश देते. द डायरेक्ट रिक्रुट इन केस दे आर फाउंड फिट फॉर द प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर पोस्ट विल बी एंटाइटल्ड फॉर नोशनल प्रमोशन फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी एंड अदर कन्सिक्वेंशियल बेनिफिट जो रही एक्सपेक्ट बैक्स वेजेस ऑन ग्रांट ऑफ प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर पोस्ट से दवाई कहुई. तेणुक यहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण राय माननीय सुप्रीम कोर्ट ये देते इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुडिक्शन ये गुरुत्वपूर्ण निर्देश गोटे देते जोटा कि कर्मचारी मानक तो आज अति गुरुत्वपूर्ण खबर. जदि खबर आपको भल लगे दयाकर निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें. धन्यवाद.